Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sami Bukhsh, a life coach, a trainer, and an English language teacher. Welcome to this video series with me. Today is a special video I have brought for you, and I have a guest with me, Miss Anila Kanwal. Thank you, Miss, for finding out time for this interview. You're welcome, Sami. Right. Miss Anila Kanwal is a foreign qualified TESOL trainer. She is Masters in English. She has more than 5 years of experience in preparation of IELTS and more than 15 years of experience in teaching English. आज की इस वीडियो में हम मिस अनीला कंवल से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन IELTS होगा. तो आइए शुरू करते हैं. मिस, आप सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज IELTS? Is it name of an English language course? Basically, like students have a lot of questions in their mind about IELTS, that what exactly IELTS is. Basically, IELTS is just a short test to check your language proficiency to go English-speaking world, like English-speaking countries, right? So basically, IELTS stands for International English Language Testing System, and IELTS is required for those, like obviously the non-users, like we are non-natives of English. So whenever you want to go abroad in any English-speaking countries for job purpose, having vocational courses, higher studies, or to go for immigration, then you have to go for IELTS. Right. So it's not a name of English language course. That is not a course at all, right? That is a certification. Right, and after having that certification you can apply for immigration or migration. Students are confused. वो ये समझते हैं कि अगर हम IELTS में जाते हैं, हम एडमिशन लेते हैं IELTS के लिए, तो हम इंग्लिश इम्प्रूव करके निकलेंगे. ऐसा है? Okay, अच्छा, to some extent that's right. In a way, like देखें, अगर आप IELTS करते हैं, मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है जो सिर्फ इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए IELTS करना चाहते हैं. They want to go abroad, वो नहीं जाना चाहते बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए भी चाहते हैं, बिकॉज दे हैव टू वर्क एंड दे वर्क इन 4 स्किल्स: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट? तो उन्हें लगता है कि अगर वो IELTS कर लेंगे, दे वुड बी इंक्रीजिंग देयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, एंड दैट्स क्वाइट इनफ फॉर देयर जॉब, फॉर देयर प्रोफेशन इन पाकिस्तान एज वेल. Right. So that does happen too. So IELTS is a name of a testing. Yep, that is Right. sort of a test. So क्या IELTS की कुछ kinds भी हैं? Are there some kinds of IELTS? Like there used to be a course of TOEFL, right, and one more course which is done by Cambridge CAE, which is equivalent to IELTS as well. After doing that CAE, you don't need to go for IELTS, right? And TOEFL, like that used to be done for going to America, but now like people prefer to go to IELTS to apply anywhere in any country, which are called English-speaking countries. Right. So can you name some of the countries which require IELTS? Yeah, there are many, as I told you, like America, Canada, England, Australia, or the universities of other foreign countries, like European countries. उनके जो universities हैं, obviously they require, like their pattern is to go with a high level of proficiency in English, so which is why they require particular bands are there which is required by some universities. तो universities के अपने caliber है कि किस university में किस course के लिए कौन सा band require. ये band क्या होता है? What is band? That is something, that is the criteria which judges your ability in English, that how much fluent you are, how much like that goes with 0 to 9. Like ऐसा नहीं है कि इसमें पास और फेल का कोई चक्कर है. Like bands are there to check that how good you are in English, right? And basically that goes from 0 to 9. When you are on 0 level, it means that you haven't attempted any test of English. When you are on 9, it means that you are called an expert user. Right. When you are on 8 band, it means that you are very good user. When you are on 7 band, it means that you are just a good user, right? So that goes like that. That checks your English language, that checks your improvement, that checks the way you study, the way you speak, write, understand, and listen. That goes like that. Right. So getting 9 bands, is it possible that we can get 9 bands? That can be possible. There are students who got 9 bands, right. And there are like 9 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 8 की जो कैटेगरी है, 8 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बाकायदा 8 को कंपल्सरी करते हैं, दैट 8 इज़ रिक्वायर्ड टू गेट दैट पर्टिकुलर
एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी. इवन इमिग्रेशन के लिए कनाडा ने के अपने ख्याल में 8 तो उन्होंने कहा है कि 8 आपका होना चाहिए, देन यू कैन गेट इमिग्रेशन वीज़ा. राइट. तो क्या हम ओवरऑल रिजल्ट को बैंड कहते हैं या हर स्किल का अलग बैंड होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लुक, अच्छा स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ओवरऑल जो बैंड आ रहा है दैट इज ओनली द बैंड दे हैव. नो, ऐसा नहीं है. एवरी स्किल इज सेपरेटेडली मार्क्ड विद द डिफरेंट बैंड, राइट. और उन बैंड्स को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका है. लाइक स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हाउ बैंड्स आर स्कोर्ड. Right, let me tell before that about band, let me tell you about the skills. There are 4 components of IELTS: reading, writing, listening and speaking. Right. And you know that there are 2 types of IELTS, academic and general. Right. Okay. अब इसमें जो फर्क है, like that simply that can be simply understood that academic IELTS is all about for people who want to go for higher studies, and general IELTS is for those who want to go for either vocational courses or want to go for immigration. So they go for general IELTS. Right. Only 2 papers are different in general and academic. ज़्यादा कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 papers का फर्क है. Like in reading and writing. Right. Only 2 papers are different between these 2. The next question. एक मेरा next सवाल है कि IELTS में जैसे आपने बताया कि there are 4 areas that are tested. True. 4 areas हैं जो टेस्ट होते हैं. तो उसमें ग्रामर का क्या रोल होता है? Look, grammar is checked in all 4 papers. Right. Even आपका जो पेपर का बैंड्स आपके स्कोर होते हैं, आपके जो स्किल्स के बैंड स्कोर होते हैं, लाइक वो उन्हीं बेसिस पर होते हैं. Let me tell you how you get good band in reading, writing, listening and speaking. When it comes to reading and writing, I told you that these 2 papers are different, academic and general. Like they both are different, right? So in academic reading, you know that like academic is more academic, technical, comparatively general. And in general reading, we go with like common subjects, common topics. Like we can go with some general topics. We can go with advertisements. We can go with some of the things of magazines, which you have to read and answer, right? And look, when it comes to writing, so in academic writing, you need to go with the first part. There are 2 parts. The first part is based on, you could say that report writing. Normally से कहा जाता है when you have to summarize the text. When you have to summarize the text, so that comes into the shape of report. Like that, that's called report writing. That's a bit technical, right? And the second one is essay. So one thing is different in academic and general, that in academic writing you have to go with, I was telling you, report writing, and in general writing you have to go with letter writing. Right. The first part is letter writing. Okay, the letter can be formal, semi-formal, or you could say that informal. Yeah, that was semi-formal. That's right. Right. Informal, right. Okay, so see, students IELTS के लिए जाते हैं. They prepare, they appear in test. और फिर ऐसा होता है कि उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो पाता या किसी भी और वजह से वो they cannot go abroad. वो जा नहीं पाते. Yes. तो मेरा सवाल ये है, तो क्या IELTS का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है? Yes. The certificate of IELTS lasts only for 2 years, right? And the case is, if you've applied for any country or any university, or that takes time of 1 or 2 years, and like there are 6 months to go to abroad, and you are done with your case to Canada, Australia or England, but there are 6 months to go for your IELTS certification, then you have to take your test again. Right. इसका मतलब ये है that IELTS expires. That expires. मतलब ऐसे जो स्टूडेंट के दिमाग में फियर है ना कि वहाँ जाने के बाद अगर हो जाए तो जब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा देना पड़ेगा. हाँ, अगर आपका केस पेंडिंग में चल रहा है या उस बीच के दौरान अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, देन यू हैव टू गो अगेन. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने IELTS का एग्जाम पास किया, रिक्वायर्ड बैंड्स, आई गॉट द रिक्वायर्ड बैंड्स, और फिर मैं अब्रॉड चला गया. ओके, आई एम स्टडीइंग देयर. तो क्या अब भी मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा? मेरा IELTS का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा? Like you are done with IELTS and you have gone abroad, right? And that expires over there. No, then you don't need to, because you're already admitted in university, or you have already started your life as a migrant over there, so you don't need to have your IELTS again. Fantastic. That's right. That is required only for documentation. That's it. Okay. अच्छा, तो क्या कोई ऐसा भी सर्टिफिकेट है या टेस्ट है जो एक्सपायर ही ना होता? As I told you in the beginning, that CAE, which is equivalent to IELTS, it doesn't have any expiry, because that is the certification of Cambridge University. So that doesn't expire. So the people who want that the certificates don't expire, so they can go for CAE. Yeah, but that is the toughest.
Toughest. more tougher than IELTS. Okay, right. अच्छा, एक और सवाल है मेरा, वो ये है कि which institutions in Pakistan are allowed to conduct IELTS test? कौन Like से British ऐसे Council, British Council है? AEO. AEO. Like, What is AEO? Like AEO is authorized economic operator. Right, that is stands for. Right, they have different other things to do, but in terms of education, they have a right to check their students' proficiency in English. They can conduct kind of exams which IDB conducts mostly internationally, which British Councils conducts, which Cambridge University conducts. So AEO is also allowed in Pakistan to conduct kind of exams. Okay, अब आप मुझे बताइए सिंपल सा प्रोसेस. फॉर एग्जांपल आई एम ए स्टूडेंट, मुझे आइल्स के लिए आइल्स में अपीयर होना है, तो कैन यू टेल मी सम सिंपल प्रोसेस कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सी वेबसाइट पे जाऊं? Like, I think there are many institutions available in Karachi. There are many institutions you can find on internet, you can find around. Right, those are conducting IELTS test. But before IELTS, you better check yourself that whether you are eligible for IELTS or not. Okay, so how can I check it? Yes, by having sort of language courses or get yourself checked by these institutions through their tests, so that you can come to know that what exactly your language is, how well can you speak, write, listen and understand. Right. So ये तो तय है कि without IELTS I cannot go to any English country. Right. अब IELTS मुझे करना है और मेरी इंग्लिश का लेवल मुझे नहीं पता कि कौन सा लेवल है, कि मैं कहाँ फॉल करता हूँ. तो अब मुझे IELTS में एडमिशन ले लूँ, मैं प्रिपरेशन के लिए ले लूँ, या मैं टेस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दूँ? I personally think that students should get themselves prepared by an institution first, rather being in a hassle to go for a test. Right. Because there are many students who get regret after taking their test without having any preparation. मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे बड़े over efficient होते हैं कि नहीं यार मैं तो खुद कर सकता हूँ, I can do it. Like, okay you can, but हो सकता है आपकी वो basics ना हो सकता है आपको वो बैकग्राउंड ना हो सकता है आपकी वो लेवल ना हो, बिकॉज IELTS इज ऑल अबाउट टेक्निक्स. देखिए IELTS टेक्निक्स का गेम है, IELTS में कुछ और नहीं होता. वंस यू नो द टेक्निक्स यू कैन इजीली डू दैट. एंड टेक्निक्स कभी भी आई डोंट थिंक सो दे कैन कम बाय बुक्स. आप बुक्स को देखिए अनलेस यू हैव समबडी हु कैन गाइड यू. अच्छा, जो IELTS की प्रिपरेशन है, दैट यू आर आल्सो एक्सपर्ट इन दैट, आप भी ऑफर कर रही हैं एक IELTS के नाम से, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट टू बी प्रिपेयर्ड? ओनली अ मंथ. A month. Right, a month is quite enough to practice yourself with IELTS, with all the skills, because I take a week to go with one skill. So obviously after that month you can be expert in all those 4 skills. All right. So that's nice. So there were so many questions that I have asked. One more thing, I think that was left in the middle. I was telling you about the band, how they were scored. Yes, that is still there. Okay, right. The question is कि बैंड्स को स्कोर कैसे, मतलब जो हमारे बैंड्स हैं या जो मार्क्स होते हैं हम जब टेस्ट देते हैं, तो क्या सिस्टम है, क्या मार्किंग क्राइटेरिया क्या है? That was the question. So please go ahead. Students normally get confused that how bands are scored. अगर इसमें आप देखिए तो 2 तरीके ऑटोमेटिक होता है, like reading and listening. वो बहुत ऑटोमेटिक तरीका है उनका कि लाइक इफ़ यू स्कोर व्हेन यू गो फॉर लिसनिंग, लाइक इफ़ यू आर डन विद 15 आंसर्स करेक्टली देन यू कैन हैव 5th बैंड. आप उसमें 5th बैंड हासिल कर सकते हैं आराम से. इफ़ यू आर डन विद 23 राइट आंसर दे कैन गो विद 6th बैंड. If you are done with 29 or 30 right answer, then you can go with 7th band. So automatically, ये तो automatic criteria है. Listening का, when it comes to reading, as I told you that reading is different in academic and general IELTS. So academic reading जाहिर सी बात है ज़्यादा crucial होती है, ज़्यादा critical होती है, तो उन्होंने थोड़ा सा आसान रखा है तरीका academic reading में. Like once a student scores 23 or something, they can easily get 6th band. जनरल में ऐसा नहीं है. जनरल में अगर आपके 23 राइट आंसर्स हैं, देने की गो विद ओनली 5 और 5.5 बैंड. तो ये थोड़ा सा उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है एकेडमिक में, क्योंकि ऑलरेडी इनके टास्क बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें बैंड की जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है थोड़ा सा आसान रखा है. ठीक है, यानी अगर आपके 35 आंसर्स करेक्ट हैं रीडिंग के पेपर में, देन यू कैन इजीली स्कोर 8 बैंड. जबकि जनरल में ऐसा नहीं है. जनरल के अंदर आपका वो जो होगा वो 7.5 पे जाएगा. तो ये थोड़ा सा इन्होंने जनरल में किया हुआ है. एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड स्पीकिंग, अब बच्चा कंफ्यूज होता है दैट हाउ वी आर मार्क्ड इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि उसका कोई ऑटोमेटिक क्राइटेरिया नहीं है जो बाकायदा उन्होंने बनाया हुआ. ठीक है ना. तो उसमें होता ये है कि राइटिंग इज बेसिकली यू नो दैट देयर आर 2 पार्ट्स. द सेकेंड पार्ट ऑफ राइटिंग इज जस्ट 2/3 of a test, the whole test, and the first part of writing is 1/3 of a test. Okay, so the first part of general writing
or academic, whatever, right? So basically, in first, how do they check? They mark you on the basis of task achievement first. 4 चीजें जिसको वो बेस करते हैं मार्किंग को. Task achievement, your lexical resource. Task achievement is all about like whatever is given to you, did you cover up? आपने उन चीज़ों को कवर किया है, वहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं आपने तमाम पॉइंट्स को लिया है, कुछ मिस कर दिया आपने जो कुछ पूछा गया आपसे. सेकंड इज लेक्सिकल रिसोर्स, व्हाट वोकैबुलरी, व्हाट वर्ड्स यू हैव यूज्ड योरसेल्फ, व्हाट लिंगर्स यू हैव यूज्ड योरसेल्फ. आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं उन आइडियाज़ को कनेक्ट करने में, उस रिपोर्ट को समराइज करने में. ठीक है. थर्ड, दे सी योर कोहेरेंस एंड कोहेजन, योर क्लियरिटी एंड कनेक्टिविटी, हाउ मच यू आर क्लियर इनफ. Like students write, like whenever you write, at times you miss many things. Like वो चीज़ पढ़ने के बाद लगता है कि आपने पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, एक पॉइंट ईस्ट में जा रहा है, एक दूसरा वेस्ट में जा रहा है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही. और कनेक्टिविटी अगर आ रही होती तो क्लियरिटी नहीं आ रही होती. They check in there. And the last but not the least, right? They check your grammar accuracy. Right? कि grammar में आप कहाँ जा रहे हैं? What are your tenses, structures, modal auxiliaries? What exactly you are using in there? Right? On the basis of that, your paper is marked because that is checked by different examiners. Okay? So they check on the basis of these 4 skills. So they like वो 4 चीज़ों में categorize करते हैं कि grammar में इसके 2 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, lexical resource में इसने 6 लिए हैं. Overall करने के बाद उनको calculate करेंगे वो. अब फर्स्ट करें कि उन्होंने एक स्किल को मार्क किया कि आपके पास कैलकुलेटर है, निकालने ताकि आपको राइट प्लीज. अब इन्होंने जो पार्ट 1 है इसका, जो ऐसे या जो भी इसका लेटर है और रिपोर्ट राइटिंग है, तो उसको अगर उन्होंने मार्क किया इन 4 चीज़ों की बेसिस पर, तो इसका जो आंसर निकला, जो टोटल नंबर्स निकले जो आपने कैलकुलेट किए सारे मिलाकर, फर्स्ट करें ये है 9. ओके. ठीक है. इस तरह अब जो है आप टास्क 2 पर आए. ओके. अब टास्क 2 को जब आप देख रहे हैं कि टास्क 2 को इसके इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पे आप इनको कैलकुलेट करेंगे, इनकी मार्किंग करेंगे आप. ठीक है. तो इनकी मार्किंग भी इसी तरीके से होगी. इनकी मार्किंग करने के बाद इसका जो नंबर आता है, फर्स्ट करें ये भी 9. ओके. 9 + 9. अब ये 18 हो गया यहाँ पर. अब 18 को डिवाइड कर दें आप 4 से. डिवाइड बाय 4. व्हाट कम्स आउट? 11.25. 11.25. अब 8 को ही, इसी जो मैंने आपको 18 दिया था, इसको जरा 3 से डिवाइड कीजिए. 18 डिवाइड बाय 3 6. अब यहाँ जो बैंड आ रहा है वो 6 बैंड आ रहा है. तो मेनली आपके जो पॉइंट्स बनते हैं, दोनों स्किल्स के जो पॉइंट बनते हैं उनको 3 से आप डिवाइड करते हैं. एज आई सेड दैट कि जो पार्ट 1 है दैट इज 1/3, पार्ट 2 2/3. तो आपके पास 3 कैटेगरीज आ गई. 3 तरीके से आप पेपर को डिवाइड करेंगे, 3 नंबर्स में करेंगे. तो आपके जो दोनों पार्ट्स के मार्क्स हैं वो उनको आपने डिवाइड करना है एंड में 3 से. What comes out, that becomes your score. बास मरतबा स्कोर जो है आपका ये भी हो सकता है कि 6.5 है, 8.5 है, 8.25 भी हो सकता है. जब 8.25 होगा तो वो बिलो आ रहा है 50 से, तो वो 8 पे जाएगा. राइट. और अगर 8.75 हो रहा है तो वो 9 पे जाएगा. That's nice. अच्छा, सेम गोज इन स्पीकिंग. इसी हवाले से एक और भी क्वेश्चन है दैट स्पीकिंग में ना, दैट इज इंटरव्यू बेस्ड, राइट? आई हैव सीन 1-on-1 सेशंस, राइट? तो उसमें ना स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम एक्सेंट जरा बना के बोलें, अगर हम व्हेन वी साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर तो हमें ज्यादा नंबर्स मिल जाते हैं. ऐसा ही है? आई एम सॉरी, बाय डूइंग इट दे जस्ट मेक अ मिस्टेक बिकॉज pronunciation is more important than accent. Right, so you cannot copy an accent, but you can go with the right pronunciation, how the words are pronounced correctly, because that is 25% of your speaking paper. Fantastic. एक और भी सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि when we have IELTS, जब हम IELTS के लिए तैयार हो जाते हैं, I'm ready for IELTS, तो क्या ज़रूरी है कि मैं प्रिपरेशन करके ही तैयार होऊंगा IELTS के लिए? क्या can I appear in test without any preparation? I don't think so, because you know that practice makes a person perfect, right? So you need to have practice, like you know everything needs a practice. As before coming to studio, we all practiced, isn't it? Yes. So I mean that's just a foolish thing. Like people who are just imprudent enough to go for IELTS without any practice, trust me, they just waste their money. So that's all about the questions. If you have any question, you can just comment below, and we will get back to Miss Anila. Miss, in the end, do you have any suggestion for the students who are willing to go for IELTS? Yes, I just need to say that don't be afraid, right? IELTS is not just a rocket science. You can do this. If one can do it, you can do it too, simply. So it is not as tough as you think. Secondly, it is not as easy as you think as well. Like कुछ बच्चे होते हैं that they just consider it as a child's play. This is not a child's play, right? At all, right? It's a hard nut to crack, but if you want to make it easy, you can, and that can be done with a good preparation, if you want to make it.
Thank you very much for your time. Thank you so much. In the end, I would like to thank Miss Anila Kanwal again. She has found out so much of her time for this interview. And I would like to pay special thanks to Tabani's group of accountancy for their studio. If you have any question, I'm asking again, any question, just send it to me. I'll get it answered by Miss Anila. That's all about today's video. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you so much.